Assalamualaikum students. Let's discuss the hydroxides of third period, which are actually sodium hydroxide, magnesium hydroxide, aluminium hydroxide, silicon hydroxide, which is also called silicic acid, then phosphoric acid, sulfuric acid, and perchloric acid. Actually, all of these are the hydroxides of third period, in which we know that the acidic strength increases while basic character decreases as we go from left to right in third period. So let's discuss that. These hydroxides of third period can be prepared by different methods, which can be, for example, if we by the hydrolysis of brine, as we all know, we can get hydrogen, chlorine, and sodium hydroxide, or by direct the reaction of sodium oxide with water, we can get sodium hydroxide. So there are various methods by which we can prepare the hydroxides of third period. Now, as we know, the first hydroxide of third period is actually sodium hydroxide, which is the most basic hydroxide of third period. Then we go towards magnesium hydroxide. So obviously the basic character will decreases. So magnesium hydroxide is weakly basic than sodium hydroxide. Then if we go towards aluminium hydroxide, so it is actually amphoteric hydroxide, which can react with both acid as well as with a base. And now the first acidic oxide of third period is actually silicon hydroxide, which was also the question of ETA 2017. All these hydroxides were given and the question was, which of the following have favorably acidic characters, और ये ऑप्शन गिवन थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड ऑप्शन डी. सो ये दोनों तो बेसिक है, ये एम्पोटेरिक है, और ये जो है सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड और सिलिसिक एसिड, इट हैज प्योरली acidic character, which was the question of ETA 2017, but it is highly weakly acidic, because if the 4 hydrogen ion has been removed, so the conjugate base, जब यहाँ से 4 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, so the conjugate base will have -4 charge, due to which it will be more unstable, और वो एसिड इंतहाई वीक होगा जिसका conjugate base क्या होगा स्टूडेंट्स, अनस्टेबल होगा. सो ये एसिडिक है लेकिन क्या है, वीकली एसिडिक. सो ये हमारे कुछ MCQs है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये थर्ड पीरियड का क्या है, मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड थर्ड पीरियड का क्या है, एम्पोटेरिक हाइड्रोक्साइड. सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड थर्ड पीरियड का लीस्ट एसिडिक हाइड्रोक्साइड. एंड देन सल्फ्यूरिक एसिड और परक्लोरिक एसिड जो है ये अपने पीरियड के मोस्ट हाईली और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स है. इसके बाद जो है सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड के बाद क्या आता है, फास्फोरिक एसिड H3PO4. सो ऑब्वियसली इट हैज a structure like this, that it is a triprotic acid. So if the 3 proton have been removed, its conjugate base will have -3 charge. Obviously the hydroxide of phosphorus जो है ये क्या है, ये भी weak acid है because of unstable conjugate base. Then move towards sulfuric acid H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता है, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड. तो यहाँ से अगर 2 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाते हैं, देन वी विल गेट दिस सल्फेट आयन. तो यहाँ पर -2 चार्ज भी है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर 2 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है which can delocalize the negative charge of these oxide ions, and due to resonance it can stabilize the conjugate base of sulfuric acid, which give extra strength, extra stability to the conjugate base of sulfuric acid. That's why we can say the hydroxide हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्सल ग्रुप्स है. So the hydroxides of sulfur जो है ये क्या है, strongly acidic है. And the last hydroxide of third period is
HClO4। और कल मैंने इस पर वीडियो की थी कि द क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद वाटर वी विल गेट परक्लोरिक एसिड। सो एक्चुअली it is the anhydride of perchloric acid. Anhydride of what? Perchloric acid. So let's discuss the structure of perchloric acid. ये मैंने बहुत दफ़ा डिस्कस किया है आप लोगों के सामने। परक्लोरिक एसिड ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप है यहाँ पर, तो अगर यहाँ से ये हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाए, सो यहाँ पर जो परक्लोरेट आयन है स्टूडेंट, उस पर क्या आएगा? -1 चार्ज। लेकिन दिस -1 चार्ज इज delocalized all over the 4 oxygen atoms by what? By resonance, which give the stability to this conjugate base of perchlorate ion, due to which the perchloric acid is the strongest acid of what? Of its third period. So we should know these characters in the hydroxides of third period. Which one is most basic, amphoteric, least acidic, and most acidic? Thank you.